Chapter 3: Synthetic Fibers and Plastics. The clothes which we wear are modes of fabrics. Fabrics are made from fibers obtained from natural and artificial sources. Can you name some natural fibers? Fibers are also used for making a large variety of household articles. Make a list of some common articles made from fibers. Try to separate them into those made from natural fibers and those made from artificial fibers. Make enter in table 3.1. Beads and paper clips when the change. Why did you use the table some fibers as artificial? You have read the previous chapter in natural fibers like cotton, wool, silk, etc. obtained from plants and animals. The synthetic fiber synthetic fiber on hand are made of a human being. That is are called a synthetic fiber and man-made fiber. What are synthetic fibers? Try to recall the uniform pattern found in a necklace of beads joined with the help of threads, or try to join a number of paper clips together to make a long chain. In figure 3.1, is there any similarity between the two? Synthetic fibers is also a chain of small units joined together. Each small unit is actually a chemical substance. How much small units combine to form a large scale unit called polymer. The word polymer comes from the Greek word poly. Poly means many. Kai. Mer means part, yeah, unit. So polymer made of many repeating units. Polymers occur in natural also cotton, for example, polymer called cellulose. Polymer किससे बना है? सेलुलोज से बना रहता है. Cellulose is made of a large number of glucose units. Types of synthetic fiber. Rayon. You have like synthetic fiber obtained from silkworm was discovered in China, where the kept and closely guard secret from the long time. Fibers obtained from silk fiber was very costly and a beautiful texture of facilitated everyone. Attempts were made of making artificial towards the end of the 19th century. Scientists were successful in obtaining fiber having properties similar to the silk. Such a fiber was obtained by chemical treatment of wood pulp. Wood pulp. Fiber was called rayon. Artificial rayon को artificial silk कहा जाता है. Although rayon is obtained from the natural source of pulp and it man-made fiber, it is cheaper. Silk can be woven as a like a silk fiber. You can date of the variety of colors. Rayon is mixed cotton make a sheet or mixed woolen make a carpet. Nylon. Nylon is another made of fiber, man-made fiber. In 1931, he was made without using any natural raw materials. Using natural raw materials from plants and animals. We are prepared from coal, water, and air. It was first used fully synthetic fiber. यह fully synthetic fiber है. इसमें नेचुरल फाइबर मिक्स नहीं है. नायलॉन फाइबर वाज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट. नायलॉन फाइबर जो है स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट, हल्का होता है. इट वाज लस्ट्रस एंड इजी टू वॉश, और धोने में इजी होता है वॉश. वेरी पॉपुलर मेकिंग क्लोथ, और क्लोथ बनाने के लिए उपयोग किया जाता है.
We use many articles made from nylon, such as socks, ropes, टेंट और टूथब्रश सबसे पहले यही टूथब्रश का ये बनाया था, टूथब्रश से बना था। कार सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स, सर्टेंस। नायलॉन इज ए नायलॉन फाइबर रियली सो स्ट्रॉन्ग एट पैराशूट में भी नायलॉन का इस्तेमाल होता है। रोप फॉर द रॉक क्लाइंबिंग, मतलब पहाड़ पे चढ़ने के लिए जो रस्सी का इस्तेमाल किया जाता है वो नायलॉन का ही होता है। ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पैराशूट, यह पैराशूट है। एंड द रोप फॉर रॉक क्लाइंबिंग, रोप फॉर रॉक, ये रॉक चढ़ रहा है। एक नायलॉन थ्रेड एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन स्टील वायर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक, polyester is another synthetic fiber made from the fiber does not get easily remains crisp and easy to wash, so it is quite stable for the making dress material. You must have the sinkable wearing polyester shirt and other dresses. Trilene popular polyester, it is a fine fiber that can be woven like any other yarn. PET, poly, polyethylene terephthalate. Terephthalate is a very familiar form of polyester. It is used for making bottles, utensils, films, ware and many other useful products. PET and polyethylene terephthalate is a familiar for polyester. बोतल, यूटेंसिल, फिल्म्स, वायर, ये सब जो है बनाया जाता है, प्रोडक्ट बनाया जाता है। लुक अराउंड द मैक लिस्ट ऑफ द मेकिंग पॉलिस्टर। पॉलिस्टर, पोली और स्टर। पॉलिस्टर दो हिस्से बना हुआ, पोली और स्टर। पॉलिस्टर इज एक्चुअली मेड फ्रॉम द रिपीटिंग यूनिट ऑफ ए केमिकल कॉल्ड द स्टर। पॉलिस्टर में क्या होता है? स्टर आर द केमिकल विच गिव फ्रूट देयर स्मेल, फल के जैसा स्मेल देता है स्टर। फैब्रिक आर सोल्ड बाय नेम लाइक पॉलीवूल और ट्राइकोट etc. As the name suggests, these are made by mixing two types of fibers. Polycoat is mixture of polyester and cotton, है ना। पॉलिस्टर के साथ कॉटन मिला रहता है, उसको पॉलीकोट कहता है। पॉलीवूल इज ए मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड वूल। पॉलिस्टर और वूल मिक्सचर रहेगा तो उसको पॉलीवूल। We wear sweaters and use shawls or blankets in the winter. Many of these are actually not made from natural wools, though they appear to resemble wools. These are prepared from another types of synthetic fiber is acrylic. The wool obtained from the natural source is quite expensive, whereas the clothes made from acrylic are relatively cheap. They are available in the variety of colors. Synthetic fiber are more durable and affordable, which makes them more popular than natural fibers. You have already performed the activity of burning natural and synthetic fibers. Class 7th. You did observe when you burn synthetic fibers, you find that their behavior is different from that the natural fibers. You must have noticed that synthetic fibers melt on heating. This is actually a disadvantage of synthetic fibers. If the clothes catch fire, it can be disused. The fabrics melt and sticks and other body of person wearing it. The should wear
code, not for synthetic clothes we are working in the kitchen and laboratory. Polyester all the synthetic fibers prepared a number of processes using raw materials. Petroleum origin called petrochemicals. Origin of petroleum petrochemicals. Characteristics of synthetic fiber. Imagine that it's a rainy day. What kind of umbrella would the wood buy? Synthetic fiber possess unique properties which make them popular dress material. They dry up quickly, are durable, less expensive, rapidly available, and easy to maintain. Perform the following activity and learn for yourself. Take two clothes same size or do synthetic fiber socks, legs and more water, natural fibers. Do you take them dry? What do synthetic activity? Synthetic fiber. Plastic. What is the plastic? You must be familiar with many plastic articles seen every day. Make you list items from the use. Linear. A linear plastic और ये cross linked plastic. Plastic is also a polymer like the synthetic fiber. All plastics do not have the same types of arrangement of units. In some it's linear, where in other cross-linked plastic articles available in the all possible shapes and sizes you can see in it. Have you ever wondered how it's possible? Then facts that plastic is easily moldable, that is can be shaped in any form. Plastic can be recycled, reused, colorless, molded, rolled into sheets or made into wires. That is very kind of such varieties of use. Polythene, plus ethene, polythene. Poly plus ethene is example of the plastic. Polythene किसका example है plastic है. It is used making commonly of the polythene bags. ये याद रखना. polyethene में क्या होती है? Now try to bend a piece of plastic yourself. You can plastic articles very easily. You will observe that the plastic articles bend easily. The breakdown of force of the bend when add hot water to plastic bottle get deformed. Such plastic which get deformed easily heating on the can be bent easily is known as thermoplastic. थर्मोप्लास्टिक को मतलब बेंट कर सकते हैं, हीट करके जो है पिघला सकते हैं, अलग अलग शेप में कर सकते हैं. जैसे पॉलीथीन एंड पीवीसी आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ थर्मोप्लास्टिक. पीवीसी पॉलीथीन का PVC are some example of thermoplastic. Are used to manufacture toys, combs, कंघी बनाते हैं, various types of containers. On the other hand, there are some plastic which are molded once मतलब एक ही बार उसको पिघला सकते हैं. Can not be softened और उसको soften नहीं बना सकते हैं, हीट देने पे उसको सॉफ्ट नहीं कर सकते हैं. These are called thermosetting plastic. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को बस एक ही बार पिघला सकते हैं और दोबारा नहीं पिघला सकते हैं. थर्मोप्लास्टिक को जितना बार चाहे पिघला के अलग अलग शेप में उसको बदल सकते हैं. जैसे पीवीसी हो, जिसे खिलौना वगैरह बनता है, कंघी बनता है, बहुत सारे. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जैसे कुर्सी वगैरह है, उसको पिघलाइएगा नहीं पिघलेगा. टू एग्जाम्पल बेकेलाइट एंड मेलामाइन. दो एग्जाम्पल है. बेकेलाइट इज ए पुअर कंडक्टर और ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट का पुअर कंडक्टर एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों का. बेकेलाइट जो है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी और हीट का दोनों का जो है पुअर कंडक्टर है. इट इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेज. बोर्ड जो घर में लगा रहता है, इलेक्ट्रिकल बोर्ड, वो सब क्या रहता है, बेकेलाइट से बनाता है. जैसे हैंडल्स और वेरियस यूटेंसिल्स है ना, कुकर का हैंडल, वो सब जो है बर्तन का जो हैंडल्स और यूटेंसिल सब जो क्या है
Thermosetting plastic. Melamine is versatile material. Versatile material resists fire and can tolerate heat better than other plastic. It used making floor tiles, kitchenwares, and fabrics which resist fire. So the various uses of thermosetting plastics. Are made of thermosetting plastic. Thermosetting plastic में ये बोर्ड है ना, ये कुकर का हैंडल है, ये प्लेट है, ये कारपेट है, ये आर्टिकल में थर्मोसेटिंग में ये वायर भी रहता है, ये डब्बा है मेड फॉर प्लास्टिक. Plastic as material for choice. Today, if we think of storing a food item, water, milk, pickles, dry food, etc., plastic containers seem most convenient. This is because of their weight, lightweight, lower price, good strength, and easily handling. Being lighter as compared to metals, plastics are used in cars, aircrafts, and spacecrafts. To list of less and a part of even articles for like sleeper furniture decoration piece सब प्लास्टिक का बना होता है. Now the discuss the character property. Plastic is non-reactive. Plastic is non-reactive. You know that the metal like iron get rusted when the exposure moisture and air, but plastic do not react with water and air. जैसे आयरन जो है एयर और वाटर से जो है रिएक्ट कर जाता है, लेकिन प्लास्टिक जो है डू नॉट रिएक्ट है ना, डू नॉट रिएक्ट. प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एंड एयर. They are not corroded easily. That is why you are used to store various kind of materials including many chemicals. Plastic is lighting, strong and durable. प्लास्टिक जो है हल्का होता है, मजबूत होता है और ड्यूरेबल होता है. Like to your parents or grandparents about the types of buckets that were used of past. What is the material of the buckets or mugs you are using today? What are the advantages of using plastic container? Since plastic are very light, strong, durable, and you can see molded into different shapes and size, it is used various purpose. Plastic are generally cheaper than metals than the use of industry and the household articles. Make the list as kitchen different containers to use of daily life. Plastic is a poor conductor. प्लास्टिक क्या है? पुअर कंडक्टर है. यू हैव लर्न अबाउट द प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, है ना. क्या है? हीट और इलेक्ट्रिसिटी का क्या है? पुअर कंडक्टर है. कौन? प्लास्टिक. प्लास्टिक हीट का क्या है और इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर. दैट इज वायर. इलेक्ट्रिकल वायर्स है प्लास्टिक कवरिंग. इलेक्ट्रिकल वायर में क्या होता है? प्लास्टिक का ही कवरिंग रहता है. एंड हैंडल ऑफ स्क्रू ड्राइवर का जो हैंडल होता है वो सब मेरा प्लास्टिक. आई मेंशन एबव. हैंडल फ्राई पैन का हैंडल में होता है. यू आर मेड ऑफ प्लास्टिक. डू यू नो प्लास्टिक आर एक्सटेंसिव यूज टू द हेल्थ केयर में भी इसका यूज किया जाता है. इंडस्ट्री सम एग्जांपल ऑफ देयर यूज है पैकेजिंग ऑफ टेबल्स टेबल का पैकिंग करने में. टेबलेट्स थ्रेड्स यूज द स्टेटिंग एंड वुंड्स. सिरिंजेस डॉक्टर ग्लोव एंड नंबर ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स. बहुत सारे जगह पे इसका यूज होता है. डॉक्टर वाली फील्ड में, इंडस्ट्री में बहुत सारे प्लास्टिक का यूज हो रहा है. स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर इज यूज्ड. माइक्रोवेव ओवन फॉर कुकिंग फूड. ओवन जो है कुकिंग फूड. माइक्रोवेव ओवन इज हीट कुक फूड बट डू नॉट इफेक्ट द प्लास्टिक वेसल. ओवन जो है ओवन
तो किस चीज़ का होता है, प्लास्टिक का होता है, लेकिन उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। टेफलॉन, टेफलॉन इज a special plastic on which oil and water do not stick. Water and do not stick. It is used for non-stick coating on cookware. Fireproof plastic. Through synthetic fiber catch fire easily. It is interesting to know that the uniform of firemen ever coating of melamine plastic make them flame resistant. Plastics and the environment. Then we go to the market. We usually get things wrapped plastic or packed in polythene bags. That is one person why plastic were kept getting accumulated in the homes. Ultimately, plastic find what is a garbage. The surplus of plastic is a major problem. Why material which gets decomposed through natural process such as action of bacteria called the biodegradable. A material which is not easily decomposed in natural process make non-biodegradable. Peels of vegetable and fruits left on our food estimates 1 to economics biodegradable तो पेपर 10 से 30 दिन के अंदर बायोडिग्रेडेबल। कॉटन क्लॉथ्स 2 से 5 मंथ में यह ख़त्म हो जाता है। वुड 10 से 15 ईयर में ख़त्म हो जाता है। वुलन क्लॉथ्स अबाउट ईयर्स। टेन एल्युमिनियम अदर मेटल्स कैन 1000 से 5000 ईयर। नॉन बायोडिग्रेडेबल जल्दी ख़त्म होता है। एल्युमिनियम टेन जल्दी नहीं होता है। प्लास्टिक बैग सेवरल ईयर्स नॉन बायोडिग्रेडेबल हमेशा चलते रहता है। प्लास्टिक बैग्स since plastic takes several years of decompose, it is not environmental friendly. It causes environmental population. Besides the burning process, can synthetic materials are quite slow and the water does completely burn easily. Process of release of the poisonous forms of the atmosphere, reducing population. We find these problems out. Avoid क्या देते हैं you ever seen the garbage dump where animals eating garbage in the process of eating food waste and the materials like polythene the bags were out of food you can write in seconds usually plastic coke educated food system animals found the synthetic items and their death the polybags careless through the responsibility for collecting drones and the various products wrapped by take away avoid the use of plastic as far as possible. Make obvious by the cotton where the shopping the biodegradable and non-biodegradable waste should be collected separately and disposed of separately. Plastic. At this year on homes, can you suggest home other ways in the which of the contribute towards reducing the plastic materials is better than recycled plastic waste. Most of the thermosetting plastic can be recycled. Make the listed of item can be recycled. However, during recycling, certain color, coloring about the added the limits of using especially for storage of food. As the responsible citizen, remember the 5R principle. 5R principle क्या होता है? रिड्यूस reuse recycle recover and refuse है ना डेवलप हैबिट विच आर एनवायरमेंट फ्रेंडली फाइबर वाइज do you know throw plastic the winter bottles on the road and cotton carry bags jute while bag shopping to minimize plastic material waste lunch and suitable ones synthetic fiber and plastic like natural fiber are made of very large units of polymers. Polymers are made up of many smaller units. Very large and smaller units. While natural fiber from plants and animals. Natural fiber obtained by the chemical process, polytrochemicals like natural fibers also again. Synthetic fiber used again from the many household like ropes
Bucket furniture containers, high use of aircraft, ships, space, and depending upon the types of chemical used for manufacturing synthetic fiber, they are called rayon, nylon, polyester, and acrylic. Different types of fiber differ from one another. Their strength, water absorbing capacity, and durability. Today, life without plastic cannot be imagined, but in more outside the plastic everywhere. Waste created plastic is not environment friendly. Handling plastics release poisonous gas and dumps of the current and man because they are non-biodegradable nature. We need use synthetic fiber and plastics such manner of the their good quality to some minutes of their environmental hazards and living communities. Chapter खत्म. 5 are peaceful: reuse, refuse, reduce, reuse, recycle, recover, refuse. प्लास्टिक है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, बैड कंडक्टर है, पुअर कंडक्टर है. कवरिंग, वायर का कवरिंग में होता है, स्क्रू ड्राइवर में प्लास्टिक होता है, फ्राई पैन में प्लास्टिक होता है. प्लास्टिक नॉट रिएक्ट वाटर एंड एयर. थर्मोप्लास्टिक पॉलीथीन पीवीसी एग्जांपल ऑफ थर्मोप्लास्टिक. इसको मोल्टेड करके अलग अलग शेप दिया जाता है. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बेकेलाइट एंड मेलामाइन पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है. इलेक्ट्रिक स्विच हैंडल वेरियस यूटेंसिल है ना, बेकेलाइट का बना होता है. हैंडल स्विच, इलेक्ट्रिक स्विच और यूटेंसिल. मेलामाइन वर्सटाइल मटेरियल होता है, टॉलरेट बीटर हीट. टाइल्स, किचन वेयर, ये सब फैब्रिक रेसिस्ट फायर. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स. पॉलीथीन, पॉली प्लस इथेन से मिलकर बना है पॉलीथीन. पेट, पॉलीथीन, टेरेटेलेट, वेरी फेमिलियर फॉर्म पॉलिस्टर है ना. बोतल, यूटेंसिल, फिल्म्स, वायर से सब प्रोडक्ट बनाया जाता है. पेट्स एक्रेलिक से बनाया जाता है. ट्राइलिन पॉलिस्टर ड्राउन टाइम टू यार्न ओवेन एंड पैराशूट एंड रोप फॉर रॉक क्लाइंबिंग सब नायलॉन का बना होता है. आर्टिफिशियल रेयन, आर्टिफिशियल सिल्क है ना. नायलॉन 1931 में खोजा गया था, मैन बनाया गया था सबसे पहला. कोट वायर एंड एयर सिंथेटिक फाइबर. नायलॉन स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट होता है. लचरस, इजी टू वॉश. नायलॉन सॉक्स, रोप्स, टेंट, टूलब्रश सब चीज़ बनाया जाता है. पैराशूट क्लाइंबिंग. लार्ज सिंगल पोली मैनी और मतलब यूनिट. सिंथेटिक फाइबर नेचुरल फाइबर होता है, वूल, सिल्क, कॉटन सब नेचुरल फाइबर होता है. चलिए तीसरा चैप्टर ख़त्म. अब नेक्स्ट चैप्टर में शाम में मिलते हैं.